आता हूँ। अमेरिका से आए हैं ये. Okay. So you haven't visited this, like completed Niagara Falls? This is the first time I just got here. Okay. You just. We can't believe. You're so young. I want to see that expression again. What is the expression when I told you my You're age? 51. Yeah, but what was that expression? Can you give me that face again? Oh my God. we can't. Let any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. गाइस अभी मैं मिला हूँ एक भाई से. तो आप कहाँ से? वेयर आर यू फ्रॉम? मैं अमेरिका से आता हूँ. अमेरिका से आए हैं ये. Okay. So you haven't visited this, like you completed Niagara Falls? This is the first time I just got here. Okay. You just came here. Yeah, हाँ जी. Okay, cool. So अभी हम चलते हैं. व्लॉग अंदर हम बनाते हैं नाहरगढ़ फोर्ट पे. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. वी टू लव ट्रैवलिंग. मैं एक शाकाहारी हूँ. ओके. शाकाहारी भाई. शाकाहारी. You're vegetarian. Vegetarian. I'm also जी. vegetarian. Oh. Yes. मैं शराब नहीं पीता. I drink. Not anymore. I used to in the past, but not now. Okay. How old are you, if you don't mind? Ikyavan. We can't believe. You're so young. I want to see that expression again. What is the expression when I told you my You're age? 51. Yeah, but what was that expression? Can you give me that face again? Oh my God. we can't believe it. It seems to be like you're in 30s. Yeah, that's what everybody's saying, that I look like I'm 30 something, but I'm like from that 70s show. No, you don't look like it. Actually. I'm 51. Oh my God. These are some awesome people I just met here. Can you remind me your names again? Hi, my name is Navru. His name My name is Abhilash. Abhilash, and what's your YouTube channel? That's Sarkar Abhi Vlogs. Can you spell that, please? Sarkar SARKARABHI. Sarkar Abhi Vlogs. Oh, wow, excellent. Because some people are watching already from India. Definitely. And they can subscribe to your channel. Thank you so And much. what kind of content do you normally make? So like travel vlogs or cafes. I visit cafes. So those vlogs only. Okay, travel and cafes. Yes. And what you're traveling to, right? Yes. I'm What's your travel channel name? blogger, Traveling Eddie. Traveling Eddie. So guys, Traveling Eddie, please do like, share and subscribe his vlogs. He has recently visited India and traveling a lot here. How long it's been that you are in India? I got here, I arrived on October 3rd. So I've been here for 2 months now. No mahine. Great. Mahine. So we came from just Delhi yesterday night only, and we'll be back tonight only. Oh, so it's just like a one-day trip. Yes, just one day trip. Well, just for as a weekend. Wow. Okay, cool. Those eyes you have are so captivating. Thank you so Oh my goodness, it's just like that ice blue. They're penetrating. They're lovely. They're lovely. Okay. I'm gonna stop right here for a moment so I can talk to you for a little bit, and then we're gonna do our thing. Because people are. Too many drama queens. Yo, I think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. Friends, ये It's all about बावड़ी है finding your right नाहरगढ़ state of का mind. ऐतिहासिक It's all about बावड़ी. turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb from the thirst. We will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first.
पतली गलियाँ इधर दिस वे एंड लोगों ने क्या हाल कर रखा है यहाँ पे देखिए पीपल जस्ट स्पिट है यहाँ। हम आ चुके हैं नहरगढ़ फोर्ट एंड काफ़ी अच्छा बना हुआ है यहाँ पे एंड 52 रुपीज़ इंडियन सिटीजन्स के लिए यहाँ पे है। अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो देन इट इज़ 42 एंड लेट्स सी चलते हैं। यहाँ से आपको पूरा जयपुर शहर का नज़ारा देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अब ऊपर पूरा सिटी व्यू देखने। चल 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 लेट्स गो। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yes, Jal Mahal also there. So this is Jaipur down below here. So आप देख सकते हैं। Way down there. I don't have to go back the whole way around. ओ Maybe I'll ask that monkey there. पूरा जयपुर शहर आप देख सकते हैं यहाँ से, कितना खूबसूरत व्यू है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। Not just the view, but because I have met two cool people. Both of you. Thank you. Really, it's all about the people. Yeah. It's all about the people. It's not about seeing the sights and seeing some old monuments. It's about the cool people you meet. The Va people you meet. It's true. Va is awesome, right? Va. Yeah. Something like that. I have recorded just for a memory. Good. Wow. Holy moly. Get down. pollution, contamination was so bad for me, for my body. It was affecting my lungs, my throat, my eyes. People thought I was sick. हम आ चुके हैं नहरगढ़ फोर्ट से। अब यहाँ पे सनसेट पॉइंट है
सॉरी सनराइज़ पॉइंट है ये। एंड चलते हैं आगे थोड़ा। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है, यहाँ से जल महल है एंड पूरा जयपुर सिटी व्यू यहाँ से भी बहुत अच्छा है। चलिए चलते हैं। आ चुके हैं अभी जल महल के पास एंड ये ऑन द वे है। यहाँ पे कोई ये जो टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है, यहाँ पे कोई टिकट काउंटर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक महल है जो कि लेक के बीचों बीच में। तो आप सिर्फ यहाँ पे आके फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। यहाँ राजस्थानी जो ड्रेस है वो पूरा ड्रेस पहन के आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफर्स हैं यहाँ पे इसके लिए, आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ जस्ट अ स्पॉट आई वुड से कि आप यहाँ आ सकते हो, फ़ोटो खिंचवा सकते हो, कुछ खा पी सकते हो एंड वापस अपने डेस्टिनेशन पे। आ चुके हैं यहाँ पे बापू बाज़ार, जो हवा महल मार्केट के ठीक बाद में है। आप यहाँ पे आ सकते हैं। काफ़ी अगर आपको कुछ भी शॉपिंग करना है यहाँ पे जयपुर में हवा महल मार्केट के पास से आप कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे बापू बाज़ार है, काफ़ी सारी शॉप्स हैं, आप यहाँ पे लाइन से देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है आपका अगर आप यहाँ पे शॉपिंग करना चाहें। ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल सकता है। चलिए। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, आ चुके हैं अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के तरफ। यहाँ पे काफ़ी अभी आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं तो यहाँ पे बना हुआ है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। एंड काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है, आप देख सकते हैं। टाइम है, हम होटल में हैं एंड अभी हम हमारे बैग्स कलेक्ट करने आएंगे एंड कुछ फूड यहाँ पे लेने आएंगे जो हम बस में जाके खाने वाले हैं। सो अभी हम पैक करा रहे हैं, पैक करा के फिर हमें भागना पड़ेगा क्योंकि 5:30 की हमारी बस है, इट्स ऑलरेडी 5। सो उसके बाद हम रात के 11 बजे तक वी विल बी इन दिल्ली। सो हमारा व्लॉग यहीं तक था। हमारा 1 डे ट्रिप आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा एंड अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।